Hello guys, good evening everyone. I welcome you all on Unacademy, India's largest learning platform. Myself, Dr. Nidhi. Hello guys everyone. Myself, Dr. Nidhi. I am alumni of King George Medical College, KGMU Lucknow. I am teaching you all physiology and guys physiology का काफ़ी अच्छा वेटेज है हमारे नीट पीजी एग्जामिनेशन में. हर साल 15 to 20 क्वेश्चन फॉर श्योर रहते हैं. So this is our scoring subject everyone. So stay tuned to my lecture so that you can clear the concept of physiology and you can score more in your exam everybody. बिफोर स्टार्टिंग अनअकैडमी के बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर. आफ्टर downloading you have to search my page, that is unacademy.com/@kgmc. This is my page. Ongoing course चल रहा है, course on concept of physiology. You can join that. There are many live special classes जिसको भी आप अटेंड कर सकते हैं. एनी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एवरीवन. काफ़ी रेनाउंड एजुकेटर हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप ज्वाइन कीजिए एवरीवन. यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड फ्रॉम दीज प्लस क्लासेस. You can take plus class, you can take iconic subscription. In plus, you will get benefited of live classes. In live classes, you can interact with your educator. You can clear your doubt in live classes only. There are many live tests, live quizzes which you can access. From that, you can analyze your preparation. How's your preparation going on? You can analyze from these live tests and quizzes. Many batch courses are going on. You can attend that also. There is a structured schedule. After following this structured schedule, you will definitely able to crack your exam with good rank everybody. Next is the iconic subscription. In iconic subscription, what will be the benefit? In iconic subscription, you will get benefited with these plus classes benefit also, and along with that you will get benefited with the prep ladders. You can access the prep ladder video lecture, you can access the question bank, you can access the rapid revision courses from the prep ladder. साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रेप लैडर के मिलेंगे. सो इफ यू वांट दिस आल्सो, दीज थिंग्स आल्सो, you can go for the iconic subscription everyone. Now coming to the fee structure. First of all, talking about the iconic subscription. First, that is one year's subscription fees is 55,000. 18-month subscription fee is 66,000. 24-month subscription fees is 77,000. 36-month subscription fee is 92,000. After using my referral code, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount in your subscription, and the subscription fee will become more economical for all of you. 12-month subscription fee will become 49,500. 18-month fees will become 59,400. 24-month fee will become 69,300. And 36-month fee will become 82,800. So that will be more economical for all of you. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi. Now coming to the plus subscription fee. In plus, you can take the subscription of 1 month also. Its fee is 5,000. 3-month subscription is 12,500. 6-month fees is 22,500. 12-month fees is 27,500. 18-month fee is 32,500. 24-month fee is 40,000. 36-month fee is 50,000. After using my referral code, that is Dr. Nidhi, you will get instant 10% discount in your subscription. So 1 month fee will become 4,500. 3-month fee will become 11,250. 6-month fee will become 20,250. 12-month fee will become 24,750. 18-month fee will become 29,250. And 24-month fee will become 36,000. And 36-month fee will become 45,000. So that will be more economical for all of you. So do use my referral code, that is Dr. Nidhi. अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, दैट इज कार्डियक साइकिल. द टोटल ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड. Now coming to the atrial event.
Atrial systole is of 0.1 second and rest period atria is in diastolic phase, that is 0.7 second. Now coming to the ventricular event, ventricular systole is of 0.3 second and ventricular diastole is of 0.5 second. Clear everyone? Now coming to this graph, you can see out here कि this is the atrial systole, and during the atrial systole ventricle is in relaxing phase. This occurs due to the AV nodal delay. कल हमने पढ़ा था AV nodal delay, and due to this AV nodal delay, when atria is contracting, ventricle is in relaxing phase. That's why proper ventricular filling occurs. After 0.1 second, ventricular systole start and it lasts for 0.3 second. Clear? Then ventricular diastole starts. This is the period where atria is also in the diastolic phase and ventricle is in also diastolic phase. This period is known as joint diastole. इस पीरियड में क्या है, दोनों ही एट्रिया एंड आवर वेंट्रिकल आर इन रिलैक्सिंग फेज, सो इट इज ऑल्सो नोन एज जॉइंट डायस्टोल. क्लियर? नाउ कमिंग टू द हार्ट रेट. Whenever a person do exercise, heart rate increases. Whenever heart rate increases, cardiac cycle का duration क्या होगा? Decrease. Cardiac cycle duration will decrease. ठीक है? In this, both systolic duration and diastolic duration both decreases. Good evening, Dr. Navneet. Diastolic duration भी decrease होगा, systolic duration भी decrease होगा, but the diastolic duration decreases more. That's why ventricular filling is impaired or compromised during exercise. Clear? Yes, Dr. Navneet, the diastolic duration shorten. Systolic duration also shorten, but the diastolic duration shortens more. That's why ventricular filling will be compromised in this case. Clear? Now coming to the ventricular systole. Ventricular systole is of duration 0.3 second. Now coming to the phases of ventricular systole. First phase is isovolumetric contraction. Second phase is rapid ejection phase. Third phase is slow ejection phase. Clear? Now coming in detail. First phase, that is isovolumetric contraction. In isovolumetric contraction, name suggest क्या कर रहा है? Volume will remain constant. ठीक है? And due to the contraction क्या होगा? Ventricular pressure start to rise. Clear? देखो, ventricular pressure start to rise, तो first event क्या होता है? Mitral valve closes. This mitral valve closure cause first heart sound. Clear? And due to this rise in ventricular pressure, aortic valve open at the end of isovolumetric contraction. Isovolumetric contraction में याद क्या रखना है? It starts with closure of mitral valve. Clear? And it ends with opening of aortic valve. Clear? Yes, ventricle relax या contract in the as a closed chamber. Clear? दोनों ही वॉल्व क्लोज होते हैं, मिट्रल वॉल्व भी क्लोज होता है, एयोटिक वॉल्व भी क्लोज होता है. दैट्स वाई वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा एज अ क्लोज चेम्बर. ड्यू टू दिस क्या होगा? वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत शार्पली इंक्रीज होगा एंड एट द एंड क्या होगा? एयोटिक वॉल्व हमारा ओपन हो जाएगा. क्लियर? अब बात करते हैं कुछ हमारा वैल्वुलर डिजीज के बारे में, सच एज एयोटिक रीगर्जिटेशन.
Aortic regurgitation में क्या होगा? During isovolumetric contraction, blood will go to the left ventricle. ठीक है? तो इस केस में there is no true isovolumetric contraction because volume is changing. Clear? इन aortic regurgitation में क्या होगा? हमारा aorta से blood left ventricle में enter करेगा because aortic pressure is still more than our ventricular pressure. Clear everyone? Now coming to the next valvular disease, that is mitral regurgitation. In this case क्या होगा? During isovolumetric contraction, blood will goes to the left atrium. जैसे ही ventricle का pressure increase होना शुरू होगा, हमारा blood atrium में pushed होगी. That's why इस case में भी we will not get true isovolumetric contraction. Clear? चलो diagram में ज़्यादा clear हो जाएगा. This is aortic valve regurgitation. Aortic valve regurgitation में क्या होगा? During isovolumetric contraction. इस पीरियड में भी ब्लड हमारा अयोटा से वेंट्रिकल में मूव करेगा, अयोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? और हमारा मीट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होगा? ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा लेफ्ट एट्रिया में पुश्ड होगा. क्लियर? That's why in both these cases we will not get true isovolumetric contraction. Clear? Now with the opening of aortic valve, rapid ejection phase starts. In rapid ejection, what happened? 2/3 of ventricular volume is ejected after opening of aortic valve. Clear? And then come the next stage, that is slow ejection phase. In this slow ejection phase, what happened? 1/3 of ventricular volume is ejected. Clear? Now coming to the ventricular diastole. Ventricular diastole total duration is 0.5 seconds and its first phase is protodiastole. In protodiastole, what happened? Backflow of blood starts. जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स करनी शुरू होगी, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल डाउन होना शुरू होगा, तो ब्लड हमारा एओर्टा से ब्लड बैकफ्लो होगा हमारा वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में. एंड ड्यू टू दिस बैकफ्लो देयर इज क्लोजर ऑफ aortic valve, and this closure of aortic valve corresponds to our second heart sound. Clear? Closure of mitral valve, first heart sound. Closure of aortic valve, second heart sounds. Clear? Now coming to the next phase, that is isovolumetric relaxation. In this phase also volume will remain constant. Aortic valve is closed, mitral valve is yet to open, so हमारा ventricle relax करेगा as a closed chamber. And due to this relaxation क्या होगा? Ventricular pressure falls sharply. ठीक है? Everyone clear? Now coming to the clinical part, that is mitral regurgitation. In mitral regurgitation क्या होगा? Blood move from left ventricle to left atria during ventricular relaxation. ठीक है? क्यों ब्लड मूव करेगा? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इज स्टिल मोर देन द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर. ठीक है? दैट्स वाई यहाँ पे भी हमें ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा. क्लियर एवरीवन? mitral regurgitation, aortic regurgitation, दोनों ही केसेस में we will not get isovolumetric contraction or isovolumetric relaxation. Clear? चलो, next phase, that is rapid filling phase. At the end of isovolumetric relaxation, what happened? At the end of isovolumetric relaxation, हमारा mitral valve get open. And due to this opening, what happened? Filling phase start. Mitral valve get open.
and due to this opening हमारा rapid filling phase start होता है and blood move from left atria to left ventricle. ठीक है, and due to this turbulence we will get third heart sound, that is S3. Clear? After the rapid filling phase there is a phase that is slow filling phase, which is also known as diastasis. Clear? These two, both rapid and slow filling phase, are passive filling phase. It corresponds to our 80% of ventricular filling. Rest 20% filling occurs due to the atrial contraction, and this is known as active filling phase. Clear? Everyone, these stages are very important. Clear है सभी को? Everyone. चलो. Now coming to the summary of heart sound. First heart sound, S1 is first heart sound and it is due to the closure of mitral valve and tricuspid valve. Second heart sound, that is S2, it is due to the closure of aortic valve or pulmonary valve. ठीक है. Third heart sound, it is due to the turbulence during rapid filling phase. S4, Dipasi, yes, S4 is fourth heart sound, that is pathological. It occurred only when atria is contracting against stiff ventricle. This is always pathological. Clear? Fourth heart sound is always pathological and it is seen in cases of long-standing hypertension, and cardiomyopathies. We will get fourth heart sound. Clear? Chal. First heart sound frequency is 25 to 45 Hz and its duration is of 0.15 second. Longest duration is of first heart sound. Clear? Second heart sound, Simran. Okay, Dr. Simran. कहाँ कंफ्यूजन है? यहाँ कंफ्यूजन है आपको? डॉक्टर सिमरन, देखिए मीट्रल रीगर्जिटेशन, मीट्रल वॉल्व रीगर्जिटेंट है, उस केस में आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम क्या होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम में नॉर्मली वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बट इन मीट्रल रीगर्जिटेशन क्या होगा? हमारा जो ब्लड है दैट इज पुश्ड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया. ठीक है, वेंट्रिकल हमारी रिलैक्स होनी शुरू हुई है. ठीक है, तो उस समय क्या है? वेंट्रिकुलर प्रेशर इज मोर. ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर इज स्टिल मोर. हमारा मीट्रल वॉल्व ओपन नहीं हुआ है, दैट मीन हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर इज स्टिल मोर. और मीट्रल वॉल्व रीगर्जिटेंट है तो हमारा जो ब्लड होगा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया मूव करेगा. ठीक है, इसलिए इस केस में वी विल नॉट गेट ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. क्लियर डॉक्टर सिमरन? हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स होनी शुरू हुई है, यानी हमारा वेंट्रिकुलर प्रेशर इज स्टिल मोर. दैट्स व्हाई ब्लड विल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रिया. That's why we will not get true isovolumetric relaxation. Clear? Which heart sounds follows S1? Our normal cases में our S3 follows S1. ठीक है? We will get first heart sound S1, then we will get second heart sound, then we will get S3, then again we will get first heart sound. Clear? Dr. Navneet, S4 is only in a cases of pathological condition. Chal. Second heart sound frequency is 50 Hz. It is the highest frequency sound. Clear? And second heart sound की duration होती है 0.12 second. Third heart sound has low frequency as compared to first and second heart sound.
and its duration is 0.10 second. Fourth heart sound is below 20 Hz. That's why it is not in audible range. And its duration is 0.10 second. Clear? No, Dr. Navneet. S3 is during rapid filling phase, not ejection phase. Third heart sound we will get during rapid filling phase. Due to the turbulence, we will get the third heart sound. Clear? Everyone, clear hai? Sare heart sound. S1 is due to closure of mitral valve. S2 is due to closure of our pulmonary and aortic valve. S3 is due to the rapid filling phase. S4 is due to the pathological condition जिसमें atria contract करेगी and push the blood into the ventricle. Clear? चलो अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप, दैट इज वेंट्रिकुलर प्रेशर लूप. बहुत ही ट्रिकी है, ध्यान से सभी लोग पढ़िएगा. इसमें फर्स्ट टर्म इज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम. व्हाट इज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम? अमाउंट ऑफ ब्लड दैट रिमेन इन आवर वेंट्रिकल आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल is our in systolic volume. Clear? And its normal value is 50 ml. Next terminology is in diastolic volume. What is in diastolic volume? Amount of blood that is present in ventricle after ventricular diastole. This is in diastolic volume and its normal value is 120 ml. Clear? These terms are clear? Chal. Now coming to the most important loop. Let me draw for all of you. This y-axis is for pressure and x-axis corresponds to our volume. Pressure and this is volume. Now coming to the first phase, isovolumetric contraction. What happened in isovolumetric contraction? Volume is constant but pressure is sharply increasing because ventricle is contracting as a closed chamber. ठीक है? तो इसमें क्या होगा? At the end of isovolumetric contraction, what happened? Our aortic valve get open. Clear? And due to this opening of aortic valve, our next phase, that is rapid ejection, start. Clear? After rapid ejection, there occur slow ejection. Clear? अब हमारा ventricular diastole start होगा. In ventricular diastole, first phase is our protodiastole. Protodiastole corresponds to everyone closure of aortic valve. Closure of aortic valve. Now again ventricle will relax as a closed chamber. Isovolumetric relaxation. Volume will remain constant. Clear? And pressure will sharply fall. Clear everyone? And at the end of हमारा isovolumetric relaxation क्या होता है? हमारा mitral valve get open. And due to opening of mitral valve, हमारी filling phase start होती है. First phase is rapid filling phase, then slow filling phase, then active filling phase. Clear? Everyone, first phase is let me change the color. This is isovolumetric contraction. Isovolumetric contraction starts with closure of mitral valve.
Clear? And it ends with opening of aortic valve. After opening of aortic valve, what happened? Rapid ejection start. ठीक है? In rapid ejection, 1/3, 2/3 of ejection occurs, and rest 1/3 of ejection occur in slow ejection phase. Clear? After slow ejection phase, our first phase of ventricular relaxation start, that is protodiastole. What happened in protodiastole? Backflow of blood, and due to this backflow, what happened? Closure of aortic valve. Aortic valve is closed, mitral valve is yet to open, so ventricle will relax as a closed chamber. So pressure will fall sharply. Clear? After the end of isovolumetric relaxation, what happened? After the end of isovolumetric relaxation, mitral valve get open, and due to this opening of mitral valve, our rapid filling, then comes slow filling, then our active filling. क्लियर? फिर हमारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, देन इजेक्शन, देन स्लो इजेक्शन, देन प्रोटोडायस्टोल, देन आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, देन मीटर वॉल्व ओपन होगा एंड हमारी फिलिंग फेज स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर है सभी को ये लूप? And this volume corresponds to our end-diastolic volume, and this volume corresponds to our end-systolic volume. ठीक है? So that's why हमारा जो width of loop है, this width of loop, it is indicating our stroke volume. Clear everyone? Chalo. Now coming to the important terminology, that is preload and afterload. What is preload? Load on a muscle before contraction start. Before ventricular contraction, what is the load on the muscle? That is end-diastolic volume. So preload is our end-diastolic volume. Clear? Now coming to the afterload. Load against which ventricle is contracting. Load against which ventricle is pushing our blood to the aorta. What is it? It is aortic pressure for left ventricle. ठीक है? So preload is end-diastolic volume. Afterload is aortic pressure. Clear everyone? Width of loop, as I discussed, it indicate stroke volume, and height of loop indicate our afterload. Clear? Width of the loop indicate stroke volume, height of the loop indicate afterload. Everyone clear? Now coming to the most important part, in different valvular disease, what happened with this pressure volume loop? ठीक है? First is mitral stenosis. In mitral stenosis, what happened? This is our normal pressure volume loop, ठीक है? And this is in mitral stenosis. ठीक है? Everyone ध्यान से देखिए. In mitral stenosis क्या होगा? This valve is stenosed, so blood coming from left atria to left ventricle will be less. That's why what happened? End-diastolic volume will decrease. ठीक है? End-diastolic volume decrease, so our loop will shift towards the left. Clear? Now, end-diastolic volume indicate our preload. So end-diastolic volume decrease है, यानी हमारा preload is decrease. ठीक है?
एंड प्रीलोड डिक्रीज है, दैट्स वाई क्या होगा, जितना कम हमारा वॉल्यूम आएगा वेंट्रिकल में उतना ही कम हमारा इजेक्ट होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, एंड दिस स्ट्रोक वॉल्यूम इज इंडिकेटेड बाय विड्थ ऑफ लूप. सो विड्थ ऑफ लूप क्या होगा, डिक्रीज. क्लियर एवरीवन? एंड विद दिस अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट. ठीक है, उसमें क्या होगा, आयोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, एंड ड्यू टू डिक्रीज इन आयोटिक प्रेशर व्हाट हैपन, आफ्टर लोड विल डिक्रीज, एंड ड्यू टू डिक्रीज आफ्टर लोड हमारी हाइट ऑफ लूप क्या होगी, डिक्रीज. क्लियर एवरीवन? व्हाट हैपन इन मीट्रल स्टेनोसिस, क्लियर है? मीट्रल वॉल्व स्टेनोज्ड है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आ रहा है दैट विल बी इम्पेयर्ड. सो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज, एंड इन डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेफ्ट शिफ्ट हमारा लूप होगा. ठीक है, इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज आवर प्रीलोड. और फ्रॉम फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, व्हाट स्टेट्स फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ? फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट our stroke volume is directly proportional to the preload. जितना ज़्यादा प्रीलोड होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रोक वॉल्यूम होगी. तो स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, यानी लूप ऑफ द पीवी लूप, विड्थ ऑफ द लूप डिक्रीज होगा. ठीक है, एंड बाय कंपनसेटरी मैकेनिज्म आयोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, दैट्स वाई आफ्टर लोड डिक्रीज होगा और हमारा लूप की हाइट कम हो जाएगी. क्लियर एवरीवन? चलो, नेक्स्ट valvular disease that is mitral insufficiency or mitral regurgitation. What happened in mitral regurgitation? We are seeing width of loop is increased, our loop shifted towards right. क्यों हो रहा है ये एवरीवन? ध्यान से, mitral valve regurgitant है. So what happened, जब ventricle is in contracting phase, तो it will push blood into the aorta. This aorta, along with aorta, it will also push the blood into our atrium, the left atrium. So when ventricle is relaxing, it will receive blood from the atrium. तो इसमें कौन कौन से blood आएंगे? हमारा regurgitant blood. We will receive regurgitant blood and blood from pulmonary circulation. ठीक है, and due to this what happened in diastolic volume increases, and due to this क्या होगा, हमारा loop shift towards right. in diastolic volume increase हो रहा है, हमारा preload increase होगा. Clear? And from Frank-Starling law, preload increase हो रहा है, stroke volume will definitely increase. So what happened? Width of loop will increase. ठीक है, आज ही हमने पढ़ा in isovolumetric, in our regurgitation, there is no true isovolumetric contraction, no true isovolumetric relaxation. So we will not get this straight line out here. We will get somewhat curved. Clear? Everyone, and due to this mitral regurgitation क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर डेवलप होता है दैट इज लेस. ड्यू टू, क्यों लेस डेवलप होगा एवरीवन? क्योंकि यहाँ पे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ट्रू आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, दैट्स वाई प्रेशर जो डेवलप होगा वो लेस होगा. इसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर लोड डिक्रीज होता है. ठीक है, एंड आफ्टर लूप डिक्रीज हो रहा है, हाइट ऑफ लूप क्या होगा, डिक्रीज होगा. क्लियर एवरीवन? एवरीवन क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट valvular disease, that is aortic stenosis. What happened in aortic stenosis? Loop shifted toward right, width of loop decreased, height of loop increased. Clear? Why this happening? Let's see. Aortic valve stenosed है, यानी after load क्या है, increase है,
and due to this increased afterload, height of loop is increased, not decreased, it is increased. Clear? और आफ्टर लोड इंक्रीज है तो फ्रॉम फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ वी ऑल नो स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्री लोड and it is inversely proportional to the afterload. Afterload is increased, so stroke volume क्या होगा? Decrease, and due to this क्या होगा? Width of loop is decreased. Clear? Everyone, stroke volume decrease है यानी जो blood हमारा ventricle में आ रहा है वो कम pushed हो रहा है, तो आफ्टर सिस्टोल जो blood बचेगा हमारा ventricle में वो ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, तो ये हमारा जो लूप है ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स राइट. ठीक है, इन सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है तो इन डायस्टोलिक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो समवॉट यहाँ पे भी शिफ्टेड है. क्लियर एवरीवन? दिस इज इम्पॉर्टेंट. एवरीवन क्लियर है? aortic stenosis. Now coming to the next valvular disease, that is aortic regurgitation. What happened in aortic regurgitation? Loop shifted towards right. Height of loop is increased. Width of loop is increased. Now see why this is happening in aortic regurgitation. Aortic valve regurgitation है यानी blood हमारा aorta से ventricle में continuous आ रहा है. ठीक है, ventricular relaxation के phase में भी blood हमारा aorta से ventricle में आएगा. That's why क्या होगा? In diastolic volume क्या होगा? Increase होगा. Due to this क्या होगा? हमारा loop shifted towards right. ठीक है, in diastolic volume increase होगा यानी preload हमारा increase होगा. ठीक है, preload increase होगा. From Frank-Starling law, stroke volume is directly proportional to the preload. That's why what happened? Stroke volume will also increase. And due to this what happened? Width of loop will increase. Clear? Everyone? Now see about this height of loop. Aortic valve regurgitant है यानी यहाँ पे no true isovolumetric relaxation. इसकी वजह से क्या होगा? Ventricular pressure जो develop होगा that will be more. ठीक है, ट्रू रिलैक्सेशन नहीं हो पाएगा, तो हमारा वेंट्रिकल का प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होगा तो आफ्टर लोड हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है, समझ में आया सभी को? दैट्स वाई हाइट ऑफ लूप क्या होगा? इंक्रीज्ड. एवरीवन, नो डॉक्टर अहमद, हमारा जो आफ्टर लोड है वो क्या है? लोड अगेंस्ट विच आवर वेंट्रिकल इज कॉन्ट्रैक्टिंग. ठीक है, आफ्टर लोड इज लोड अगेंस्ट विच आवर वेंट्रिकल इज पुशिंग द ब्लड इनटू द आयोटा. ठीक है, बट यहाँ पे आयोटिक रिवॉल्व रिगर्जिटेंट है यानी रिलैक्सेशन के पीरियड में हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं होगा. आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन नहीं होगा तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है उसमें ज़्यादा फॉल नहीं हो पाएगा, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर विल बी मोर. ठीक है, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर को भी डिनोट करता है हमारा दिस हाइट ऑफ लूप. थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे इसलिए हो रहा है कि हमने बताया विड्थ ऑफ लूप इज इंडिकेटिंग आवर स्ट्रोक वॉल्यूम and height of loop is indicating our everyone after load, and height of loop also indicate our ventricular pressure. ठीक है, and due to this क्या होगा? यहाँ पे ventricular pressure जो है वो ज़्यादा होगा. That's why after load increase and that's why यहाँ पे height increase हो रहा है. Clear डॉक्टर अहमद? चलो, now coming to the summary of this,
In mitral stenosis, what happened? Our loop shifted towards left and the height of loop decreased. Clear? In mitral regurgitation, what happened? हमारा loop shifted towards right and height of loop decreased. In aortic stenosis, what happened? Height of loop increased and loop shifted towards right. And aortic regurgitation में क्या होता है? Loop shifted towards right. ठीक है? And height of loop increased. Clear? From this you can differentiate if any picture based MCQ come. Regurgitation है यानी we will not get true isovolumetric contraction and relaxation. ठीक है? Regurgitation है यानी हमारा इन diastolic वॉल्यूम ज़्यादा होगा यानी स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा दोनों ही केसेस में. ठीक है? स्टेनोज्ड है एओर्टिक तो हमारा आफ्टर लोड जो इंक्रीज होगा इस केस में सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगा. क्लियर एवरीवन? चलो अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पे. दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. अभी जस्ट डिस्कस किया. इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम इज आर स्ट्रोक वॉल्यूम. सो इट्स नॉर्मल वैल्यू इज 70 ml. नाउ कमिंग टू द इजेक्शन फ्रैक्शन. Ejection fraction is amount of volume of blood that is pushed from the end diastolic volume. ठीक है? So ये क्या हो जाएगा? Stroke volume upon end diastolic volume into 100. And in normal healthy individual, ejection fraction is 55 to 65%. Clear? Next जो फॉर्मूला है दैट इज इम्पॉर्टेंट. काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं. इन डायस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इन सिस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन 1 माइनस इजेक्शन फ्रैक्शन. एंड दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू इन डायस्टोलिक वॉल्यूम into 1 minus ejection fraction. Clear? These are important. Everyone remember this formula. Ejection fraction क्या होता है? Ejection fraction is stroke volume upon in diastolic volume into 100. And in normal healthy individual it is 55 to 65%. Clear everyone? चलो. Now coming to the most important diagram, that is Weger's diagram. ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है. एक एक करके समझेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सभी को. दिस इज blue one, this is ventricular pressure. ठीक है? And we will study about this ventricular volume, pink one. ठीक है? We will study about echocardiography. We will study about phonocardiography. First, coming to the ventricular pressure. First phase, we studied about isovolumetric contraction. Isovolumetric contraction starts with mitral valve closure. And due to this mitral valve closure, what happened? We will get first heart sound. ठीक है? And at the end of isovolumetric contraction, what happened? Our aortic valve get open. And with the opening, what happened? Ejection phases start. First is rapid ejection, then comes slow ejection. After ejection phase, what happened? Ventricular relaxation start. First phase is protodiastole, and in this protodiastole, what happened? Our aortic valve get closed. Aortic valve is closed and mitral valve is yet to open. So ventricle will relax as a closed chamber. So pressure will fall sharply. And at the end of isovolumetric relaxation, what happened? Mitral valve get closed. Sorry, mitral valve get open. After that, what happened? Rapid filling, slow filling, and active filling. During active filling, what happened? Atria will contract, so ventricular pressure will slowly rise in this phase. Clear everyone? This is about ventricular pressure. Clear? This is important.
पिक्चर बिगिंस एमसीक्यू आने की काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है एवरीवन. नाउ कमिंग टू द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम. ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, हमारा valve will open or ejection will start. तो ventricular volume will fall sharply. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ ejection क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन शुरू होगा, तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. एंड एट द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन व्हाट हैपन, हमारा मीट्रल वॉल्व ओपन होगा एंड हमारी रैपिड फिलिंग होगी, देन स्लो फिलिंग होगी, देन फिलिंग ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल. ठीक है. This is about ventricular volume. Clear? Everyone? Now coming to the ECG correlation to this. ठीक है. हमारा जो ECG में ये है QRS complex and this is T wave. QRS is, everyone, ventricular contraction. And it will corresponds to this isovolumetric contraction and ejection. ठीक है. और रिलैक्सेशन के टाइम में हमें repolarization, ventricular repolarization के टाइम हमें T wave मिलेगा. क्लियर. एंड ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टॉल के टाइम में जो एक्टिव फिलिंग हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें P wave मिलेगा. क्लियर एवरीवन. QRS complex correlate with this one, isovolumetric contraction and ejection. Isovolumetric relaxation will corresponds to T wave. ठीक है. Rapid filling, active filling, sorry, rapid not active filling. Active filling will corresponds to the P wave. Clear? अब आते हैं most important phonocardiography का correlation. First heart sound is due to the mitral valve closure. So हमें फर्स्ट हार्ट साउंड जो मिलेगा दैट इज समवॉट हियर. ठीक है. सेकेंड हार्ट साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ aortic valve. So we will get third second heart sound out here. ठीक है. And third heart sound is due to the rapid inflow and due to this turbulence. So we will get third heart sound out here. ठीक है. Fourth heart sound. It is not in normal cases, but in pathological cases, it will correspond to the active filling phase. S4. Clear everyone? Chalo. Now coming to the summary. First heart sound is when corresponding to the ventricular phase. Which ventricular phase? Isovolumetric contraction. And ECG correlation की बात करें तो it is related to the QRS complex. Second heart sound कब मिलता है? During isovolumetric relaxation में. And ECG correlation is with T wave. ठीक है. S3 is during the rapid filling phase. ठीक है. And it will come between T and P wave. ठीक है. S4 is pathological but we will get during the atrial contraction. ठीक है. So that's why it will correlate with the P wave in ECG. Clear everyone? चलो अब आते हैं JVP पे. Right atrial pressure is recorded from internal jugular vein. ठीक है. From internal jugular vein we will measure the right atrial pressure. This is known as jugular venous pressure. ठीक है. Why right internal jugular vein से measure करते हैं? Why not external jugular vein? Because this is our right atrium and internal jugular vein is in the line of right atrium. ठीक है. External jugular vein is somewhat like this. External jugular vein and this is internal jugular vein. Internal jugular vein is in line with the right atrium. That's why we are measuring the right atrial pressure from the internal jugular vein. ठीक है. And the normal JVP is about 2 mm of Hg. ठीक है. इसमें 3 positive wave होते हैं, A wave, C wave and V wave. And 2 descendant या 2 down slope.
X descendant and Y descendant. Clear? 3 positive wave, A wave, C wave, V wave. 2 descendant, X descendant, Y descendant. Clear? Now coming to the A wave. A wave corresponds to our atrial systole. ठीक है, अब बात करते हैं some clinical aspects की. Large A wave, अगर हर बीट में large A wave मिले तो ये कब मिलता है? In cases of tricuspid stenosis. Tricuspid valve stenosed है तो atria will contract strong. ठीक है, atria को बहुत ज़्यादा strongly contract करना होगा ताकि वो ventricle में blood push कर सके. That's why we will get large A wave. ठीक है, there is another term that is cannon wave. We will not get large wave in every beat. In this we will get intermittent large A wave. और ये कब मिलता है? In cases of AV dissociation of heart block. ठीक है, atria and ventricle एक साथ contract करनी शुरू हो जाती है and we will get large A wave. ठीक है, but this is intermittent. Clear? And this A wave will be absent in atrial fibrillation. ठीक है, clear? Now coming to the next wave, that is C wave. C wave is due to the bulging of tricuspid valve into right atrium during right ventricular contraction. ठीक है, this C wave. अब आते हैं next downslope, that is X downslope. X downslope indicate the right atrial relaxation. AV dissociation में हमें कैनन वेव मिलता है. थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में एट्रिया और वेंट से जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल में नहीं जाता है. डॉक्टर अहमद, थर्ड डिग्री जो ब्लॉक आप बता रहे हो, इन थर्ड डिग्री ब्लॉक द इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया doesn't go to the ventricle. This is complete heart block. ठीक है, तो इस केस में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती. बट ये जो कैनन वेव की बात कर रहे हैं उस केस में एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है. ठीक है, दैट्स वाई क्या होता है, एट्रिया में जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है और वी विल गेट लार्ज ए वेव. ठीक है, क्लियर डॉक्टर अहमद? चलो अब बात करते हैं एक्स डाउन स्लोप. राइट एट्रियल रिलैक्सेशन की वजह से ही दिस एक्स डाउन स्लोप आता है एंड दिस इज एब्सेंट इन ट्राइकस्पिड रीगर्जिटेशन. ट्राइकस्पिड वॉल्व रीगर्जिटेंट है तो हमारा ब्लड जो है वेंट्रिकल से एट्रियम में जाएगा और हमारा जो एट्रियल रिलैक्सेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा. दैट्स वाई वी विल not get X downslope in atrial regurgitation, tricuspid regurgitation. Clear? अब आते हैं next wave, that is V wave. V wave is due to the venous return to the atrium. ठीक है, और जो left atrium में blood आ रहा है that is from the pulmonary circulation. ठीक है, pulmonary circulation plus bronchial circulation. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया है वो तो आएगा ही, प्लस हमारा ब्रोंकियल सर्कुलेशन से जो ब्लड आ रहा है वो भी हमारा एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम में. दैट्स वाई इन लेफ्ट एट्रियम द वी वेव इज लार्ज. क्लियर? वाई डाउन स्लोप. वाई डाउन स्लोप इट इंडिकेट राइट एट्रियल एम्प्टिंग. ठीक है, या फिर कह सकते हैं वेंट्रिकुलर फिलिंग को डिनोट करता है दिस वाई डाउन स्लोप.
and this wide downslope is absent in cardiac tamponade. In cardiac tamponade, what happened? In pericardium, what happened in cardiac tamponade? Anyone? What happened? In cardiac tamponade, pericardium में fluid accumulation start हो जाता है. And due to this fluid accumulation, it will exert pressure on ventricle. ठीक है? Due to this pressure, हमारा जो ventricular filling है, एट्रिया से जो ventricle में blood आ रहा है, that will be impaired. That's why in cardiac tamponade, wide downslope is absent. Yes, Dr. Ahmed, if there is fluid accumulation in pericardium, that will exert pressure on the ventricle. ठीक है? And due to this pressure क्या होगा? जो एट्रिया से ventricle में blood आ रहा है, that will be impaired. That's why wide downslope will be absent. Clear? अब बात करते हैं दूसरे downslope की. I guess दोनों हो गया. अब बात करते हैं कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कार्डियक टेम्पोनल एंड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है? एनीवन? इन कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस देयर इज क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन of pericardium, and due to this क्या होता है? It will exert pressure. It will exert pressure on the atrium. ठीक है? तो जो ventricular filling है, that will be increased. That's why we will get prominent wide descent in constructive pericarditis. ठीक है? This is the important term, that is cardiac tamponade में हमें जो wide descent मिलता है, that is absent. While in constructive pericarditis, there is prominent wide descent. Clear? Everyone? चलो, अब आते हैं, this is normal JVP. ठीक है? And this is in cardiac tamponade. What happened in cardiac tamponade? Wide descent is absent. ठीक है? जबकि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में दिस वाइड डिसेंट इज प्रोमिनेंट. क्लियर एवरीवन? चलो, next is pulmonary capillary wedge pressure. Left atria pressure is recorded by this method, pulmonary capillary wedge pressure. ठीक है? And its normal value is 5 mm of Hg. Right atrial pressure is recorded by our jugular venous pressure, and left atrial pressure is measured by pulmonary capillary wedge pressure. ठीक है? Normal JVP is 2 mm of Hg and normal left atrial pressure is 5 mm of Hg. Clear? अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज जो हमने पढ़ा उसी को हम अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में. फर्स्ट क्वेश्चन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन इज डिफाइंड एज. Option A, relaxation of both atria. Option B, relaxation of both atria with all valve open. Option C, relaxation of left ventricle with mitral and aortic valve closed. Option D, relaxation of left ventricle with mitral and aortic valve open. Everyone answer this question. Isovolumetric relaxation is defined as. Everyone answer this question. Isovolumetric relaxation is defined as.
आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम में क्या होता है? ventricle is relaxing as a closed chamber. Both mitral and aortic valve are closed. Clear? Now coming to the next question. Preload leads to, ठीक है, preload leads to isovolumetric relaxation, isovolumetric contraction, peripheral resistance increase, parasympathetic nervous system activation. Everyone answer this question. Preload leads to, everyone answer this question. Preload is our in diastolic volume. After the diastole, what will happen? Our systole phase will start, isovolumetric contraction. Very good, Dr. Ahmed. Very good, Dr. Abhishek. Next question. Duration of atrial systole is, everyone answer this question. Duration of atrial systole is 0.8 second, 0.57 second, 0.11 second, 0.44 second. Everyone answer this question. The duration of atrial systole lasts for only 0.1 second. No, Dr. Ahmed, atrial systole is of 0.1 second, atrial diastole is of 0.7 second, ventricular systole is of 0.3 second, ventricular diastole is of 0.5 second. Answer is C. Clear? Next question. Duration of a second heart sound is 0.15 second, 0.12 second, 0.08 second, 0.1 second. Everyone answer this question. Duration of a second heart sound. Very good, Dr. Ahmed. Second heart sound duration is 0.12 second. First heart sound is of longest duration. It is of 0.15 second. Third heart, this is point S2. And third heart sound and fourth heart sound is of duration of 0.10 second. Clear? Next question. S2 is due to rapid gush of blood in ventricle. Option B, atrial contraction. Option C, AV valve closure. Option D, semilunar valve closure. Everyone answer this question. S2 is due to everyone answer this question. S2 is due to second heart sound is due to our semilunar valve closure. AV valve closure causes our first heart sound. Semilunar valve closure causes our second heart sound. Rapid gush of blood causes our third heart sound. And atrial contraction against stiff ventricle causes our fourth heart sound. ठीक है, आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Third heart sound is due to closure of AV valve, closure of aortic valve, mid-diastolic flow in the ventricle. Option D, atrial contraction. I guess ये clear होगा. Everyone answer this question.
Third heart sound is due to. Third heart sound is due to. It is due to the mid-diastolic flow in the ventricle. Very good, Dr. Ahmed. Fourth heart sound is due to closure of AV valve, closure of semilunar valve, rapid ventricular filling, atrial contraction. Everyone answer this question. Fourth heart sound is caused by. I guess these are clear for everyone. Yes, Dr. Ullah, answer is T. Very good. Next question. Fourth heart sound is due to. Repeat है, skip करते हैं. Next question. During the cardiac cycle, the opening of aortic valve take place at the beginning of systole, end of isovolumetric contraction, option C, end of diastole, option D, end of diastasis. Everyone answer this question. Opening of aortic valve take place at which phase? Everyone answer this question. No, Dr. Ullah. Yes, Dr. Ahmed, you're right. At the end of isovolumetric contraction, हमारा aortic valve get open. And due to this opening, what happened? Ejection phase starts. Clear? Next question. At the end of isovolumetric relaxation, AV valve open, AV valve close corresponds to C wave in JVP. Option D corresponds to T wave in ECG. Everyone answer this question. At the end of isovolumetric relaxation phase, what happened? AV valve open, AV valve close corresponds to the peak of C wave in JVP, corresponds to T in ECG. Everyone. At the end of isovolumetric relaxation, क्या होता है? हमारा mitral valve open होता है and हमारा जो filling phase है वो start हो जाता है. Very good, everyone. C wave corresponds to atrial systole. ठीक है? So answer is A. Next question. Which of the following, which one correlate with isovolumetric contraction? AV valve opening and aortic and pulmonary valve closure. Option B, AV valve closure and aortic and pulmonary valve opening. Option C, both valve close. Option D, both valve. Okay, Dr. Ahmed, let me see. At the end of isovolumetric relaxation corresponds to T wave of in ECG. This is also right, Dr. Ahmed. T wave is our ventricular repolarization.
or you can say ventricular diastole or ventricular relaxation. So isovolumetric relaxation will correspond to T wave in ECG. This is also right. Very good, Dr. Ahmed. Next question. ठीक है, I guess ये तो सभी को पता होगा. Which of the following which one correlates with the isovolumetric contraction phase? No, Dr. Ahmed, you was right. Option D is also correct. Isovolumetric contraction. Everyone answer this question. I guess सभी को clear है? Very good, everyone. Both valve are closed. In isovolumetric contraction, isovolumetric relaxation, दोनों ही केस में दोनों ही valve closed होते हैं. Clear? Next question. Isovolumetric relaxation phase of the cardiac cycle ends with peak of C wave, opening of AV valve, closure of semilunar valve, beginning of T wave. Isovolumetric phase of a cardiac cycle ends with. Everyone answer this question. Very good, Dr. Ullah. Very good, Dr. Ahmed. No, Dr. Abhishek, answer is B. Opening of AV valve. Ventricular relaxation, isovolumetric relaxation के बाद क्या होता है, हमारा जो AV valve है वो ओपन होता है एंड हमारी फिलिंग फेज स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, आंसर इज बी नॉट सी. Clear? Next question. Which of the following is true about fourth heart sound? Option A, can be heard by the unaided ear. Option B, frequency is greater than 20 Hz. Option C, heard during ventricular filling phase. Option D, heard during ventricular ejection phase. Everyone answer this question. Which of the following is true about fourth heart sound? Very good, Dr. Ahmed. Heard during ventricular filling phase. इसकी जो frequency होती है that is less than 20 Hz. So it cannot be heard from unaided ear. ठीक है, हमारी ऑडिबल रेंज से बिलो होता है, दैट्स वाई वी कैनॉट हियर फ्रॉम द अनएडेड ईयर. ठीक है, और ये कब मिलता है? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, दैट इज एक्टिव फिलिंग फेज. क्लियर? वेरी गुड एवरीवन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following heart sound may be a normal finding during pregnancy? Option A, fixed splitting of S2. Option B, S3. Option C, S4. Option D, pericardial knocks. Which of the following heart sound may be a normal finding during pregnancy? Everyone answer this question. Which of the following heart sound may be a normal finding during pregnancy? Very good, Dr. Ullah. S3 हमारा normal finding होता है every time. ठीक है.
Fixed splitting of S2, it is a pathological. S4, it is also pathological against stiff ventricle. जब हमारा stiff valve के against हमारा जब contract करता है atria, तो हमें S4 मिलता है. Pericardial knocks, it is also a pathological heart sound. Clear? Next question. This is on the Viger's diagram. We already discussed. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एवरीवन ध्यान से कीजिएगा. वेंट्रिकुलर फिलिंग बिगिंस एट अ पॉइंट. ऑप्शन ए एट पॉइंट ए, ऑप्शन बी एट पॉइंट बी, ऑप्शन सी एट पॉइंट सी, ऑप्शन डी एट पॉइंट डी. एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन. वेंट्रिकुलर फिलिंग बिगिंस एट पॉइंट. Everyone answer this question. Very good, Dr. Ahmed. देखो वेंट्रिकुलर फिलिंग हमारा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम होता है. कौन सा फेज? फर्स्ट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन. ये है हमारा आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन जिसमें हमारा प्रेशर शार्पली फॉल कर रहा है. एंड एट द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या होगा? मीट्रल वॉल्व ओपन हो जाएगा एंड ड्यू टू दिस ओपनिंग हमारा फिलिंग फेज विल स्टार्ट. वेरी गुड डॉक्टर अहमद, वेरी गुड डॉक्टर अंबुज. तो हमारा जो फिलिंग फेज है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द डी पॉइंट. क्लियर एवरीवन? सो पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू आने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है. तो एवरीवन जितने भी आज हमने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस किए या जितनी भी हमने थ्योरी में पिक्चर्स किए हैं वो सभी लोग रिवाइज कीजिएगा. प्रेशर वॉल्यूम लूप एंड वैल्वुलर डिजीज में दिस लूप चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सभी लोग ध्यान से रिवाइज कीजिएगा. ठीक है, आज का सेशन आई गेस एक क्वेश्चन और है, उसे और कंप्लीट कर लेते हैं. चलो ये क्वेश्चन भी सभी लोग अटेम्प्ट करो. Closing of mitral valve begin at a point. Mitral valve closure begin at a point A, B, C or D. This is also on Viger's diagram. Everyone answer this question. Closing of mitral valve begin at a point. Everyone. Very good, Dr. Ahmed. Answer is A. This is A to B point is isovolumetric contraction. And isovolumetric contraction starts with closure of mitral valve and it ends with opening of aortic valve. Very good everyone. कुछ नई टर्मिनोलॉजी है, इसे भी देख लीजिए एवरीवन. इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल, इट इज रिटन एज QS2. It is the time interval between the start of Q wave and second heart sound. ठीक है. Next terminology is left ventricular ejection time. It is the period between carotid pressure rise to the closure of aortic valve. ठीक है, and this closure of aortic valve give us dicrotic notch. ठीक है, and इसको measure करने के लिए we use carotid transducer. Clear? Next terminology is pre-ejection period. Pre-ejection period is difference between electromechanical systole and left ventricular ejection time. ठीक है, and ratio of our pre-ejection period upon left ventricular ejection time is normally it is 0.35. ठीक है, ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी है, इसे भी सभी लोग याद रखिएगा. काफी बार क्वेश्चन आया है ऑन दिस इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टोल.
What is electromechanical systole? It is the time interval between the start of Q wave and second heart sound. ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन टाइम क्या होता है? इट इज द पीरियड बिटवीन कैरोटिड प्रेशर राइज टू द क्लोजर ऑफ aortic valve. ठीक है. And due to this closure of aortic valve, we will get this dicrotic notch. And to measure this left ventricular ejection time, we will use carotid transducer. Clear? Pre-ejection period क्या है? It is the difference between electromechanical systole and left ventricular ejection time. ठीक है. And ratio of pre-ejection period upon left ventricular ejection time, normally it is 0.35. Clear? Important है terminology, सभी लोग याद रखिएगा. We will definitely crack our exam with good rank. You have to follow my lecture regularly. You have to go through your syllabus regularly, and after going through your syllabus you have to do MCQ. After doing MCQ only you can be able to apply your theoretical knowledge into the MCQ. So I will highly suggest everyone कि हर questions किया कीजिए. जैसे ही आपने टॉपिक कवर किया यू विल गो टू द MCQ एंड उससे रिलेटेड सारे MCQ कीजिए. तभी आप सीख पाओगे कि अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क. आपको रेगुलर मेहनत करनी है, रेगुलर आपको क्लासेस अटेंड करनी है, रेगुलर रिवाइज करना है. यू विल डेफिनेटली एबल टू अचीव योर टारगेट एवरीवन. कल का सेशन भी 5 o'clock होगा. टुमारो वी विल स्टडी अबाउट कार्डियक आउटपुट. दैट्स ऑल फॉर टुडे.